Good morning, students. In the last video lecture, we were discussing about the various techniques of capital budgeting. Capital budgeting is basically one of the important techniques or method which help us in giving the investment decision that whether the project or any proposal which has to be taken up in near future has to be accepted or rejected. So for accepting or rejecting, the return should be one of the criteria. But along with return, the risk is also considered, that whether the company is in position or capable to bear the amount of risk for the expected return. So in my opinion, that whenever a proposal has to be taken or considered, then it has to be evaluated from both the point of view, return as well as risk point of view. For that purpose, we make use of the various techniques which are available in capital budgeting. In the previous few lectures, which are already uploaded in the form of video, you can see that for making the application of capital budgeting technique, the person should be very much aware about the cash flow statement. He should understand the difference between the cash flow statement and the accounting profit, because the decision can be taken with the help of accounting profit, as well as the decision can be taken with the help of cash flow statement. But those techniques which make the application of accounting profit, they have some drawbacks. And the remaining important techniques which are there, which can be used for appraising the project, but they require the knowledge of cash flow statement. मतलब हमारा बोलने का मतलब यहाँ पर यह है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा होता है, उसकी मदद से भी हम लोग डिसीजन कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट को लें या ना लें. लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसको हम लोग ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया, एंड दोज ड्रॉबैक्स वर ओवरकम विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो. और जितनी भी बाकी की टेक्निक्स हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे हमारे एप्लीकेबल होंगी. लाइक आई शेयर, like we can say that these are the videos which are already uploaded. So for understanding the current video, you should be very much aware about the videos which are already uploaded. Like the first video, that was capital budgeting introduction. The second was cash flow statement versus accounting profit. Third, we have started with the techniques where payback period and ARR, that is average rate of return, this we have discussed in third video. This ARR and payback period, this is called as a traditional technique, and it will be making use of accounting profit. But these techniques have some drawback. That is why we started with the NPV, and NPV and other methods that we are discussing, they will be making use of cash flow statement. तो ये सारे आप लोग वीडियोस देख लें. उसके बाद जो आज हम लोग नेक्स्ट टेक्निक करने जा रहे हैं इन द कैपिटल बजटिंग, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू calculate or understand the relationship between the variables. Profitability index is also known as BCR, that means benefit cost ratio, which can also be called as benefit cost ratio, or it can also be called as PV index. PV index means present value index. They are one and the same thing. Either you can say as profitability index, या benefit cost ratio, or PV index.
Basically, this technique is the extension of net present value. Net present value में हम लोग क्या करते थे? We try to calculate the difference between the present value, cash flow, the difference between the present value of cash inflow and cash outflow. कि मतलब कैश इनफ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू होती थी उसमें से हम लोग कैश आउटफ्लो की वैल्यू को माइनस करते थे एंड वी वर एबल टू गेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रपोजल. और पॉजिटिव एनपीवी एक्सेप्ट करते थे, नेगेटिव रिजेक्ट करते थे और जीरो में इनडिफरेंट. पीआई इंडेक्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन द सेम लाइन. इसको भी हम लोग एनपीवी टेक्निक का ही एक्सटेंशन कहते हैं और सेम लाइन में ही कंसिडर करते हैं. डिफरेंस खाली इसमें इतना है कि हेयर वी ट्राई टू डेवलप द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल. और वेरिएबल हमारा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. तो उन दोनों वैल्यू का जो रिलेशन है दैट वी ट्राई टू सेट इन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. दैट मीन्स हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं दैट पीआई इज इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश inflow, right? And this can be divided by, this has to be divided by total present value of cash outflow. मतलब कैश इनफ्लो को हम न्यूमरेटर में रखेंगे और कैश आउटफ्लो को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे. इसका मतलब यही हो गया कि आउटफ्लो मींस द इन्वेस्टमेंट अमाउंट दैट वी जनरली डू इन द 0 year and inflows are the future cash flows that we are receiving from the accepted project. तो आउटफ्लो की वैल्यू तो सेम रहेगी whether when we convert in the present value, but the value of cash inflow is going to change with respect to the rate of discounting rate applicable. और डिसीजन मेकिंग की अगर बात करें यहां पर जब इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो है, दैट मीन्स एनी प्रोजेक्ट विच इज मोर देन वन विल बी एक्सेप्टेड, लेस देन वन has to be rejected and equal to 0 will be indifferent. जैसे कि एनपीवी में करते थे कि दैट एनीथिंग पॉजिटिव हैज टू बी एक्सेप्टेड, नेगेटिव रिजेक्टेड और 0 वहां पर इंडिफरेंट था. इसीलिए कहा कि जो बेनिफिट्स हमारे एनपीवी के हैं या डिमेरिट जो एनपीवी के हैं सेम विल बी एप्लीकेबल इन द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. Here only we are able to develop the relationship between the two variables, and the two variables are the cash inflows and the cash outflow. Right. Now the equation that we follow. The equation that we follow, this can be the equation. Profitability index is equal to summation from the first year to the nth year. Cash flow, we are talking about the cash inflow. ये कैश इनफ्लो हमारा है, उसको हमने डिस्काउंट किया 1 + k. k इज द डिस्काउंटिंग रेट, ith ईयर और डिवाइड कर दिया हमने कैश आउटफ्लो से. मीन सिंपली वी कैन से that we are able to get the relationship between the two variables. Like the example that we can take, like this can be an example. देखिए एक प्रोजेक्ट है having a life of 4 years.
लाइफ ऑफ 4 ईयर, 0 1 2 3 4। और कैश फ्लो देखिए, इस प्रोजेक्ट में 0 ईयर में आउटफ्लो है 40,000 और थर्ड ईयर में भी आउटफ्लो है 20,000, जबकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमारा इनफ्लो है 20,000 40,000 एंड फोर्थ ईयर में ऑल्सो वी आर हैविंग इनफ्लो एज 20,000। द डिस्काउंटिंग रेट हैज बीन कंसिडर्ड एज 10%। द वैल्यूज ऑफ डिस्काउंटिंग रेट्स आर गिवन। जो प्रेजेंट वैल्यू टेबल है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल, उसी टेबल से आप रेफर कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके से पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया है 1/1 + k to the power n that we can say फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, उससे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। मींस रुपए 1 की वैल्यू 10% पे अगर डिप्रिशिएट करेगी तो 0.909 जाएगी फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में द सेम रुपी विल बी 0.826 if discounted at 10%, right? Fourth column you can see the present value that we are having. We have multiplied the cash flow and the discounting rate. Second column multiplied by the third column. So first year or in the 0 year the value remains the same. It comes to same as -40,000. Second year the rupee has depreciated at the rate of 10%. It is 0.909 multiplied by 20,000. You are getting as 18,000. The same 40,000 multiplied by 0.826, 33,040 rupees. 20,000 that was also an outflow, नेगेटिव में दिया है, मतलब आउटफ्लो इन द थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट में कुछ आया नहीं, बट वी हैव इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। डिस्काउंट करेंगे 0.751 से एंड वी आर गेटिंग एज -15,020 एंड फोर्थ ईयर वी आर गेटिंग अगेन एन इनफ्लो ऑफ 20,000 whose present value will be 13,660। अब अगर इसका हमको पीआई निकालना है, we have to calculate the PI of this, then what we can say that the sum of inflows, ये प्रेजेंट वैल्यू हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब 18, we can say as 18,000 plus 33,040 प्लस थर्ड ईयर हमारा नेगेटिव में है, we should not consider, and fourth year we are having again an inflow 13,660। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे it will come to as 64,880 rupees. This is your cash inflow, right? This can be said as the cash inflow. Next line में cash outflow, जो कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू देखिए क्या है 40,000 प्लस ये दोनों माइनस में है आपके, और दूसरा था आपका 15,020, sorry 15,020, and this will come to as 55,020। that means inflow, this is not the PI, this is cash inflow. Inflow is, the present value of inflow is 64,880 and outflow is 55,020. Now what will be the PI? PI is equal to 64,880 divided by 55,020, and this will be somewhere 55,000 है, ये 64,000 है, मतलब 1 point something, 1.18। that means 0.18 is the benefit that we are getting from this project। 1 पे तो हमारा इंडिफरेंट हो जाता है and it is greater than 1,
so we have to accept this project. नेक्स्ट देख लेते हैं. देखिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया गया है. What we are having here, that cash outflow is given as 10,000 in A project and cash outflow is given as 21. दो प्रोजेक्ट है A और B. एक में 10,000 लगा रहे हैं, एक में 25,000 लगा रहे हैं, और दोनों का जो एनपीवी बताया गया है 1,000 रुपए. दैट मीन्स 1,000 in A project and 1,000 in B project. तो बेनिफिट कौन सा होगा? सिंपल सी बात है, 10,000 लगाकर 1,000 मिल रहा है और 25,000 लगाकर भी 1,000 ले रहा है. दैट मीन्स 10,000 इज हैविंग मोर बेनिफिट. इसी को ही आप पीआई के फॉर्म में कर सकते हैं, राइट? दैट 1,000 डिवाइडेड बाय 10,000, और ये 1,000 आपका आया है. अगर ये एनपीवी है मतलब इसमें आउटफ्लो भी आपका एडेड है. इट इज द सेपरेशन ऑफ और इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, मतलब ये 11,000 होगा. एनपी 11,000. अगर पीआई निकाले, पीआई, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग 11,000 आपका इनफ्लो है एंड डिवाइडेड बाय 1,000, दैट इज योर सॉरी, डिवाइडेड बाय 10,000. 10,000. Automatically it will come to as somewhere as 1.1. और यही चीज अगर आप यहां पे करेंगे 26,000 डिवाइडेड बाय, इट विल बी less than, we can say. So here we can say that we are having less investment, here we are having more investment. अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 11,000 डिवाइडेड बाय 10,000 divided by 10,000, it is coming as 1.1. 1.1. और दूसरा प्रोजेक्ट देखिए जो आपका प्रोजेक्ट बी है, इसका पीआई निकाल लें. ये हो जाएगा 26,000, मतलब एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू आपकी 26,000 है डिवाइडेड बाय 25,000. अब देखिए करके ये 26,000 डिवाइडेड बाय 25,000, इट इज कमिंग एज 1.04. 1.04. That means the NPV says both the project are same. You can accept both the project as positive return has been shown. But PI says that A is better. That means the amount of investment is less and the benefit that you are getting as same as, we can say, as B project. आप 10,000 लगाइए इसमें और 10,000 का एक प्रोजेक्ट और ले लीजिए, आपका बेनिफिट आपका दुगना हो जाएगा, या 1.5 गुना कोई प्रोजेक्ट और ले लीजिए. Another example. Again we are having two projects, A and B. आउटफ्लो दिखाया गया, एक में 1 लाख है, दूसरे में 80,000 है. प्रेजेंट वैल्यू एक में 1,20,000 है, दूसरे में 1 लाख है. तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऐसे ही निकल आएगा. 1,20,000 डिवाइड बाय 1 लाख, इट विल गिव एज 1.20. And 1 lakh divided by 80,000, it will give as 1.25. That means B project is better. और एनपीवी देखिए दोनों का 20,000 है. तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि that where we are having a tie or we are not able to take the decision with the help of NPV, then profitability index can be the better technique, or we can say extension of NPV itself, which can help us in taking the decision. क्योंकि आप ए प्रोजेक्ट में 80 लगा रहे हैं, ए प्रोजेक्ट में 1 लाख लगा रहे हैं और बी में 80 लगा रहे हैं. 1 लाख लगाने से आपका प्रेजेंट वैल्यू भी 1.20 आया, और यहां पर 80 लगाने से
फिर प्रेजेंट वैल्यू आपका 1 लाख आया, मतलब एनपीवी आपका दोनों में 20,000 है, तो ऑटोमेटिकली पीआई सेज दैट लेसर इन्वेस्टमेंट एंड हैविंग द सेम रिटर्न विल बी बेटर एज कंपेयर टू मोर इन्वेस्टमेंट एंड सेम रिटर्न. तो 1.25 we can say B project has to be accepted. Again a small problem. What they have shown that we are having an outflow of 1,50,000 and 1,10,000 A and B respectively. An inflow is 2,10,000 and 1,65,000. ठीक, और एनपीवी दिया गया है 60,000 और 55,000. यहां पर वी कैन से 60,000, यहां पर 1,50,000 है ए में और बी में है 1,10,000, जबकि एनपीवी दोनों के फर्क है. तो एनपीवी दोनों के फर्क है, तो हम ये कह सकते हैं कि दैट हायर एनपीवी हैज टू बी एक्सेप्टेड, दैट इज वी कैन से 60,000. लेकिन अगर हम इनका पीआई निकालें, पीआई वी कैन से ऑफ ए प्रोजेक्ट, तो ए प्रोजेक्ट में 2,10,000 है आपका, डिवाइड बाय 1,50,000. तो ए प्रोजेक्ट में, फॉर ए प्रोजेक्ट पीआई विल कम टू एज 1.4 एंड फॉर बी प्रोजेक्ट का दिया गया है दैट इज 1,65,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000. इट इज कमिंग टू एज 1.5. मींस यहां पर ये पीआई है, इन दोनों का पीआई ब्रैकेट में कर देते हैं ए, तो प्रोजेक्ट का अंडरस्टैंडिंग हो जाता है. ये भी आपका पीआई है और ब्रैकेट में फॉर प्रोजेक्ट बी. तो यहां पर पीआई तो कहता है कि भाई आप बी वाले को लीजिए, लेसर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज हेयर वी हैव 1.5 एंड हेयर वी हैव 1. बट एनपीवी सेज वी कैन टेक 60,000 because it is having, or A project which is having more return as compared to B. यहां पे सिर्फ हम लोग ये कह सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज कैपिटल रैशनिंग. मतलब अगर कंपनी के पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं तो 1,10,000 बी में लगाए और 40,000 रुपए जो बचते हैं वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दे, तो उससे बेनिफिट कंपनी का बढ़ जाएगा 55,000 यहां पर, और जो दूसरे में 40 लगाएगा उससे भी कुछ ना कुछ आपका बेनिफिट आ जाएगा. लेकिन अगर कंपनी डू नॉट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल रैशनिंग, देन इन दैट केस ए प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड बिकॉज द फुल 1,50,000 विल बी इन्वेस्टेड हियर एंड वी आर गेटिंग मोर रिटर्न. क्योंकि कैपिटल हमारे पास 1,50,000 है. अगर कैपिटल हमारे पास 1,50,000 है तो हम पूरा का पूरा ही इन्वेस्ट कर दें और 60,000 कमाएं. और यहां पर हम अगर कैपिटल हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम 1,10,000 लगाएंगे और दूसरे में 40 लगा सकते हैं, देन बी विल बी एक्सेप्टेड. So here we can say that on the basis of NPV technique, A has to be accepted if capital rationing is not applicable. तब हम 60, अगर कैपिटल रैशनिंग एप्लीकेबल है तब हम बी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे. सो दैट इज अ सिचुएशनल कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू टेक अप, दैट वेदर कैपिटल रैशनिंग कॉन्सेप्ट इज अवेलेबल, मतलब एक से ज्यादा प्रोजेक्ट अवेलेबल है कि नहीं है. इन दैट केस इट हैज टू बी कंसिडर्ड. सो इन दिस वी कैन से द डिसीजन मेकिंग हमने आपको पहले ही बता दिया कि दैट इफ द प्रोजेक्ट इज हैविंग the higher PI is going to accept it as compared to the lower PI. Anything more than 1 will be accepted, less than 1 will be rejected, 0 or 1 will be indifferent, we can say. So this is also one of the good technique and good examples that we have considered. In the next lecture
we will take up the next technique of capital budgeting, maybe internal rate of return. और जो भी बुक्स आप लोग ये रेफर करते हैं, you try to see and practice. And if you want to have some query, you can mail to me. Okay, thank you all of you.